हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राबिया शाहिद। हर कोई मंडे का इंतजार कर रहा था। अब मंडे आया है तो मंडे चला भी गया है। लेकिन जब मंडे आया था तो देयर वाज द एपिसोड ऑफ कभी मैं कभी तुम, द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ कभी मैं कभी तुम। और पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एपिसोड बिकॉज इट वाज द काइंड ऑफ वेरी इमोशनल और एक ट्विस्टिंग मतलब फैक्टर बीच में आया था। और काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस थी इस लेटेस्ट एपिसोड में जिन्होंने लोगों की अटेंशन जो है वो ग्रैब किया। एंड ऑब्वियसली आई एम हेयर टू रिव्यू दैट एपिसोड। और बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। आई थिंक दिस एपिसोड वाज ऑल अबाउट रुबाब एंड अदील एंड ऑब्वियसली नताशा। नईमा बट की परफॉर्मेंस आई थिंक एक नेगेटिव कैरेक्टर ना पहली दफा कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो रहा है। मतलब शी हैज जस्टिफाइड हर कैरेक्टर सो मच, सो नाइसली, सो वेल एंड ब्रिलियंटली। मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस थी, आई जस्ट लव्ड इट लाइक it was amazing. I just loved her acting और जिस तरह से she exposed Adeel, that too in front of a whole lot of a public और एक पार्टी देकर she exposed him। और I was a fan but मतलब the performance, I am the fan of the performance। और जैसे मैं बात कर रही थी, एक नेगेटिव कैरेक्टर जो है ना वो जस्टिफाई हुआ है। मतलब she was on her right and I think the character of Rubab, it's not so negative. कहीं ना कहीं the character is also positive but still the acting was great। मतलब जो अदील और रुबाब का जो कैरेक्टर है, they both were amazingly brilliant in their performances in the acting, if we talk about the acting। एंड दूसरी जानिब जब अगर हम हानिया की बात करें तो हानिया गिरी पड़ी थी अपने अपार्टमेंट में। एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू शो हियर इज दैट कि इफ यू रन after something, like if you run after money, if you run after fame, that's how you're gonna fall। मतलब इस तरह से आपको मतलब एक सबक मिलता है। बट आई थिंक यू हैव टू रन आफ्टर योर ड्रीम्स। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग अगर आप अपने ड्रीम्स को चेज करना चाहते हैं। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन मुस्तफा वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, तब भी वो एक इशू था कि मुस्तफा कुछ कर नहीं रहा। अब व्हेन मुस्तफा इज डूइंग समथिंग तो वो भी एक इशू है कि ही इज नॉट लुकिंग एट होम, ही इज नॉट लुकिंग आफ्टर हिज ओन वाइफ। so that is also an issue but it's not that complicated। मतलब every women get pregnant and उनके हस्बैंड जो हैं वो घर पे तो नहीं रहते ना, दे डू गो आफ्टर द वर्क और एनीथिंग। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्टूपिड ऑफ दी शार्जीना टू बिलीव कि उनके जो हस्बैंड हैं भी वो घर पर ही रहेंगे और टू लुक आफ्टर हर एंड थिंग्स लाइक दैट। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ फैंटेसी के द रियलिटी चेक वही है जो हो रहा है। एंड if I think I remember that uh, and I also remembered that dialogue by Mustafa कि अभी हमारी हालत नहीं है बच्चा पैदा करने वाली, बच्चे रखने वाली। सो या मतलब दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, so that's the reason he doesn't want to have a child, but Hania, sorry, Sharjina wants to have a kid। So I think that literally complicates the matter, but now she's gonna blame him for the loss of the child since she lost her kid after the fall। So there are a lot of factors. I think people are expecting to have a happy ending, which I am thinking they'll not get। वो एक ड्रामा हमारी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में कि कोई एक ड्रामा जब लोगों को पसंद आता है तो अब कहानी बदल दी जाती है एंड टाइम पर। मतलब a hero or might be heroine has to die। matlab this is not something like, oh come on, you can like give us a happy ending, like people are expecting to have a happy ending, but again I don't feel like we'll be getting a happy ending, the kid has died, maybe Sharjina won't survive, but the online banter between the people is currently going on and people are saying कि Sharjina will die and इस तरह से मुस्तफा को lesson मिलेगा। what lesson bro? He was doing what he was supposed to do, he was doing what every man was like, every man has to do that for living। मतलब a man is considered as the bread earner of the home, of the house, so he was doing exactly the same। now what's the issue about that? so थोड़ी सी अनरियलिस्टिक भी है ड्रामा में। आई थिंक जो अटेंशन ग्रैब करने की चीज है, दे आर जस्ट ड्रैगिंग। और
it has to be something like exciting and happening in the next episode. मुझे लगता है अब कुछ एक दो एपिसोड में वो रोना पिटना चलेगा, फर्जीना का आ गया, आई लॉस्ट द बेबी जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सो उनके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, दे फाइट, दे विल गेट सेपरेट, और उसी दौरान जो है मुस्तफा इज गोइंग like towards the major great heights. He is like earning great money, he is becoming successful, they are getting financially better. So there is a love between the couple, but obviously the complications, they are like they will show us. It will, I think, drag the drama, and लोगों की attention जो है वो खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं. मतलब if people are loving it too much, they don't have to brag it, they don't have to drag it, just end it in a good way कि लोग याद करें. और ऐसे बहुत से ड्रामास हमारे पीछे भी गए हैं, जैसे मेरे पास तुम हो, आई पर्सनली लाइक्ड इट. द स्टोरी वाज वेरी appealing, and although I have some issues with the writing, but whatever, like the acting was great. But again, if we talk about Kabhi Main Kabhi Tum, so I think let's see what happened the next episode. और मुझे ये feeling आ रही है कि they will drag it a little bit, like 1 or 2 episodes, or just to get more views. और 5 नवंबर को वी आर हियरिंग के सिनेमा में लास्ट एपिसोड जो है वो दिखाई जाएगी. सो लेट्स सी क्या होता है. और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस लेटेस्ट एपिसोड, और व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर द अपकमिंग एपिसोड ऑफ कभी मैं कभी तुम. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. बाय बाय.